Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Okay, so welcome to the class of microwave engineering. Before I start today's lecture, uh, let me ask a question. You might have already seen the recorded lecture regarding use of Smith chart and how we can use it to solve transmission line problems. So before I proceed, any question you have regarding Smith chart? Any confusion? So it means you people have no question regarding Smith chart. Okay, so let me proceed with today's lecture now. Today I'm going to talk about one of the device that you have already seen in the lab of microwave engineering, and that device was given a name of slotted waveguide. So this is basically a device that is used to measure some important parameters of transmission line. Okay, so normal waveguide is a complete closed structure. If you remember, I showed you that waveguide is a unique transmission line because it is made up of a single conductor and it is just like a hollow metal pipe. Okay, so if I want to show you a normal waveguide, so that waveguide is kind of a, let's say, with a rectangular cross section. So this is how a rectangular waveguide look like. So it is closed from four sides. So it means this top wall, this bottom wall, and left and right, it is completely closed. It is only the signal can travel only through this point. Okay, so this is inside of waveguide. So you can uh, put something from this side and you get something on the other side. This is normal waveguide. Now we are talking about slotted waveguide. So this slot, what is the purpose of this slot? So if I want to measure something which is traveling inside this waveguide, so I cannot measure it because it is completely closed structure. Okay, but there is one device that we use, and that is having a slot at the top of the waveguide. So if you consider that you have the same waveguide now, but now there is one slot that is put on the top. So let me show you that there is on the top, we have an opening, which I'm calling as slot. So this portion is slot. This one is normal waveguide, okay? So in normal waveguide, you don't have any slot or any opening, but now once we have slot, in other words,
there is one window at the top of the waveguide, and now I can put some mirroring device inside this slot, and with the help of that mirroring device we can find out the magnitude of the electric field at different points along this waveguide. Unfortunately, due to closure of university, we couldn't perform experiments, but hopefully after opening of university, we will perform number of experiments with the help of this slotted waveguide, and then you will get a hands-on experience of this particular device. Right now, we want to look at the theoretical concept of slotted waveguide and how it is used to measure different quantities. Okay, so let me write the basic uh, properties of slotted waveguide. So one of the use of slotted waveguide is it allows the sampling of the electric field amplitude on a terminated line. With this device, the standing wave ratio, that is represented as SWR, and the distance. Let me put also electric field or voltage so that we can make use of circuit theory as well as field theory. In circuit theory, we use voltage, and in field theory, we use electric field. So with this device, SWR, and the distance of the first voltage minimum from the load can be measured. And this is something which we will perform in the lab as well. So when we will use slotted waveguide, we will be measuring two quantities. The first thing is with the help of slotted waveguide, you can measure SWR. And the second parameter that you will measure is the first voltage minimum. The first voltage minimum. So these are two quantities that we can measure with the help of slotted waveguide. And these two parameters will then be useful for us to find out the unknown impedance. So let me write the third statement about slotted waveguide. Once we measure, so let me represent this voltage minimum by this symbol L minimum. So L minimum is the symbol that I'm using for the distance of the first voltage minimum. So once we measure SWR and L minimum, we can also determine the unknown load impedance. So there is one lab that we will perform after university opens, and that is we will have some impedance, load impedance, but we will not know what is the value of that impedance. So ZL will be unknown.
So what we will do, we will make use of slotted waveguide. And with the help of slotted waveguide, we will measure two quantities, that is SWR and L minimum. And once we know L minimum and SWR, then we will be able to find out ZL. So let's find out what is the mathematical analysis of this situation. How SWR and L minimum will help us to find out ZL. Okay. So we already have one equation that we have derived, and that is the impedance equation. So if you remember, there is one equation that we have derived with the help of transmission line theory, and that was impedance equation. So the idea is, if there is a transmission line with characteristic impedance Z0 and propagation constant beta, because right now we are assuming that this is a lossless transmission line. So rather than representing the propagation constant by gamma, I am representing it with beta. And if it is terminated by some load ZL, and if the length of transmission line is represented by L, and if I want to find out how much is going to be the impedance between these 2 points of transmission line, which we call as Zin. So Zin can be determined with the help of this equation that we derived maybe 2 or 3 lectures back. And there were two equations. One is this one, right? Zn is equal to Z0 and 1 plus gamma e raised to power minus J2 beta L divided by 1 minus gamma e raised to power minus J2 beta L. This is one equation, and that's, if you remember, there is an alternate form of this equation as well, where Zn is equal to Z0 ZL plus J Z0 tangent beta L divided by Z0 plus J ZL tangent beta L. These are two representations for finding out how much is Zn. Okay. Now, using this equation, I'm going to find out ZL. So our problem is ZL is unknown. So how can I make use of this equation to find ZL? So if I want to find out the impedance ZL, so it means I am interested in finding out how much is the impedance between these 2 points. So now the value of L will become 0, because if length of transmission line is measured from this point, okay? So length is increasing. And when you reach over here, you have, so at this point, L is equal to 0. So what will happen to this equation? Let me use this equation. Okay, I'm using this one, this equation. So if you put L equal to 0, so this exponential factor will become 1. Similarly, exponential factor will become 1. So what you will get? When L becomes 0, this Zn becomes equal to ZL. So what is the equation that we will get? So for L equal to 0, Zin can be called as ZL, and that will be equal to 1 plus gamma divided by 1 minus gamma into Z0. Okay, so this will become 1, this will become 1, and you will get. So now this equation is going to help us. So if I want to find ZL, of course, Z0 is always known. Transmission line that we have connected with the load, its properties will be known to us. Okay, so Z0 is known to us, beta is also known to us.
The only thing that is unknown in this equation is gamma. So once we know gamma, we will be able to find out ZL. Okay. But what is gamma? Gamma is a complex quantity and it has two parts. It has magnitude part and it has phase part as well. So if I want to find gamma and then substitute it over here to find out ZL, I must find out two things. I need to find out what is the magnitude of the reflection coefficient, and I need to find out what is the phase of the reflection coefficient. Okay, so now let's talk about the magnitude, how you will find out the magnitude. So there is one relationship that we derive between standing wave ratio and reflection coefficient. Okay, standing wave ratio and reflection coefficient are related, and the relationship was, as I have already derived it, so I'm just writing it directly, that magnitude of the reflection coefficient is always equal to standing wave ratio minus 1 divided by standing wave ratio plus 1. So I will be able to find out the magnitude of the reflection coefficient if I know standing wave ratio. And now, if you go back, I mentioned this thing that with the help of slotted waveguide, you can measure SWR. So with this device, the SWR can be measured. So you will make use of slotted waveguide and you will measure SWR. Once you know SWR, once you measure SWR and then substitute its value, you will be able to find out the magnitude. So now SWR can be measured using slotted waveguide. So once you measure SWR with the help of slotted waveguide, you substitute its value over here and you will be able to find out the magnitude. So magnitude part is now known to us. Now the next unknown is phase. What is the value of theta? Phase of the reflection coefficient. Phase of gamma. Now, if you go back, with the help of slotted waveguide, we can measure what we can measure. We can measure the distance of the first voltage minimum from the load position. Okay, so in this figure, this is the load position. So when you move away, from the position of the load, so at some point there will be minimum voltage. Okay, so this distance can be called or can be represented by L minimum, the symbol that I am using it. So from the load position, when you move towards the source or generator, the voltage will change and there will be one point at which voltage will attain its minimum value. So let's assume that this is the point at which voltage is minimum. So this is the distance of the first voltage minimum, L minimum. So we can measure L minimum, but let's find out how L minimum is going to help us to find out this phase theta. Okay. Now in in previous lectures, when I was deriving this thing, let's go back. Yes, this one. If you go back to the lecture where I derived this relationship between SWR and gamma, during derivation of this equation, we found that voltage will be minimum under certain conditions. So let me refer back to that condition. So let me write it down. We know
that voltage minimum occurs when e raised to power j theta minus 2 beta L is equal to minus 1. So when I'm saying we know, it means that I am asking you to refer to the lecture during which I derive this relationship. Okay. So in that lecture, we were finding out. So let me give you a brief brief summary of the topic that I'm referring to. In that lecture, what we did was we were trying to find out SWR. So I defined VSWR as the ratio of maximum voltage divided by minimum voltage. Okay. And the general form of the voltage equation is voltage V of Z is equal to V naught plus e raised to power minus j beta Z plus gamma e power plus j beta Z. So using this general form of voltage, we found out that what is the maximum value of V of Z, that is represented by this symbol. And then we found out what is the minimum value of this voltage, which we call as V minimum. So during derivation of V maximum and V minimum, we make use of this mathematical idea that this voltage will attain its minimum value whenever e power j theta minus beta is equal to minus 1. And similarly, we are not using that concept, but if you remember, when voltage this voltage, when it attained its maximum value, then this e raised to power j theta minus 2 beta L was taken to be equal to plus 1. So we all know that exponential function minimum value is minus 1. So when this function attains its minimum value, voltage will also become minimum. And when this function attains its maximum value, and that is plus 1, then this V of Z become V maximum. So this is something that you can refer back to my previous lecture, as well as you can refer to the textbook. I'm going to use this equation to find out how we are going to find out theta. Okay, so voltage minimum will take place whenever this e raised to power j theta minus 2 beta equal to minus 1. Okay, and because we are talking about L, so I have denoted the distance that when this is the point. So this is the point at which voltage will be minimum. And because this distance is now represented by L minimum, so rather than calling it L, I will call it L minimum. So I will say e raised to power j theta minus 2 beta. When L becomes L minimum, then we will have this situation. Okay. Now the question is, under which condition exponential function, that is e raised to power j theta minus 2 beta minimum, 2 beta L minimum will be equal to minus 1. So now we just need to make use of mathematical concept that what should be the value of this thing, so that e raised to power j multiplied by this thing becomes equal to 1, become equal to minus 1. Can anyone answer this question? What should be this thing so that e raised to power j something becomes equal to minus 1? Anyone?
एक्सपोनेंशियल फंक्शन -1 के बराबर कब होता है जी? इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। सर 180 का एंगल हो जब। Yes. So it means that is the answer to this question. It means whenever theta minus 2 beta L minimum, whenever it is equal to pi. Of course रेडियन, क्योंकि ये एंगल इस वक्त हमने रेडियन में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो 180 डिग्री और पाई। whenever theta minus 2 beta L minimum is equal to pi, exponential function will be equal to -1. So from this, theta is equal to pi plus 2 beta L min. And this is the equation that I was looking for. So हमारा टास्क क्या था कि हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फेज फाइंड करना था, और अब हमारे पास रिलेशनशिप आ गई कि फेज ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फाइंड, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? पाई प्लस 2 बीटा एल मिनिमम। एल मिनिमम हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? एल मिनिमम हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लॉटेड वेवगाइड। जो ये स्टेटमेंट मैंने दी थी, इसको अगर आप दोबारा से देखें, विद दिस डिवाइस द SWR and the distance of the first voltage minimum from the load can be measured. So SWR जो हमने measure किया होगा उसको कहाँ पे हम यूज करेंगे? इस इक्वेशन में यूज करेंगे, और हम क्या चीज फाइंड कर लेंगे? हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। और जो एल मिनिमम हमने फाइंड किया होगा विद द हेल्प ऑफ स्लॉटेड वेवगाइड, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इसकी मदद से हम क्या फाइंड कर लेंगे? थीटा फाइंड कर लेंगे। तो हमने जो फाइंड करना था, दो चीजें हमने फाइंड करनी थी। इस इक्वेशन को यूज करने के लिए हमें एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, और एक हमने फेज फाइंड करना। So once you know magnitude, once you know theta, you will be able to find out ZL. So जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई थी ये वाली, कि अगर हम SWR मेजर कर लें, अगर हम L मिनिमम मेजर कर लें, तो फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अननोन इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को अब मैंने मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह साइन कर दी है कि ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है कि SWR और L मिनिमम मेजर करने के बाद ZL हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये इम्पीडेंस इक्वेशन यूज की, Zn, जो हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। और फिर मैंने ये कहा कि ये जो इक्वेशन है जिसको मैं इम्पीडेंस इक्वेशन कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं इस इक्वेशन को किसी भी इम्पीडेंस के लिए यूज कर सकता हूँ फाइंड करने के लिए। तो इस केस में मैंने क्या फाइंड करना था? मैंने ZL फाइंड करना था, लोड इम्पीडेंस फाइंड करना था। तो लोड इम्पीडेंस के लिए इसका मतलब है कि L को जीरो करना पड़ेगा। L को जीरो करने से ये इक्वेशन आ गई, और इससे हमें ये पता चला कि अगर हम अननोन लोड इम्पीडेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हमें गैमा फाइंड करना पड़ेगा। एंड नाउ गैमा बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है। हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का, और फेज भी फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम SWR यूज कर सकते हैं, और SWR हम कहाँ से मेजर कर सकते हैं? स्लॉटेड वेवगाइड की मदद से मेजर कर सकते हैं। और इस तरीके से थीटा फाइंड करने के लिए हमें L मिनिमम फाइंड करना है, और L मिनिमम भी हम स्लॉटेड वेवगाइड की मदद से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज the use of slotted waveguide. So I will say L minimum can be measured using slotted waveguide. So ये जो मैथमेटिकल एनालिसिस मैंने किया है स्लॉटेड वेवगाइड का, ये फिर आप एक जब प्रैक्टिकल लैब परफॉर्म करेंगे वहां पे ये कंसेप्ट यूज होगा। सो एट दैट टाइम आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग दिस होल आइडिया, आई विल बी ट्राइंग टू अप्लाई दिस आइडिया टू द प्रैक्टिकल लैब। सो यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये मैं जो इक्वेशंस मैं लिखूंगा तो वो किस बेस पे लिख रहा हूँ। ठीक है, now moving on to the next topic, and that is water wave transform. Let me abbreviate it as QWT.
Quarter wave transformer, we have already talked about it, but today we are going to describe the purpose of this device in microwave engineering. इस वक्त जो हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के बारे में आपको आइडिया मैंने दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर इज बेसिकली अ ट्रांसमिशन लाइन having length equal to lambda by 4. So let me write it down that quarter wave transformer is a transmission line having length equal to lambda by 4. And because of that reason इसको हम quarter wave कह रहे हैं because the length is quarter of a wavelength. So अगर मैं इसको फिगर बनाऊं तो ट्रांसमिशन लाइन इसकी लेंथ लैम्डा बाय 4 हो इसको हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ तो कुछ भी हो सकती है. लैम्डा बाय 8 भी हो सकती है, लैम्डा बाय 7 भी हो सकती है, लैम्डा बाय 5 भी हो सकती है. Why we are giving importance to ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ लैम्डा बाय 4 है और उसको फिर हमने क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का नाम भी दिया हुआ है. Why this transmission line? Why this length of transmission line is useful for us as a microwave engineer? So इसका जो एक यूज जो भी हम डिस्कस भी करेंगे वो ये है कि इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन को हम यूज कर सकते हैं फॉर इम्पिडेंस मैचिंग. सो इट इज a useful practical circuit for impedance matching. सो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की इंपॉर्टेंस क्या है कि देयर विल बी प्रॉब्लम जिसको हमने इम्पिडेंस मिसमैचिंग का नाम दिया हुआ है. सो जब भी इम्पिडेंस मिसमैचिंग प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए आपको सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा और वन ऑफ द सर्किट जो आप यूज कर सकते हैं वो है क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर. नाउ इम्पिडेंस मैचिंग और इससे एसोसिएटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इस वक्त इस पर्टिकुलर क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इसको किस तरीके से हम इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज कर सकते हैं. ये किस तरीके से हमारे मिसमैच लोड इम्पिडेंस को मैच कर देगा. मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. ठीक है ना. सो लेट्स लुक एट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर. So the working of quarter wave transformer can be described in a number of ways. ठीक है. इसको एक्सप्लेन करने के इसके वर्किंग को हम डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो एक जो टेक्निक है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और जो दूसरा है वो फिर आप खुद बुक से इसको देख लेंगे. वंस यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया तो वो भी आपके लिए आसान होगा टू अंडरस्टैंड. सो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पिडेंस व्यू पॉइंट. सो हम इम्पिडेंस को यूज करके इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं. पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ जिसके रेफरेंस से मैं फिर इक्वेशंस लिखूंगा. सो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है. पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं जिसको हम फिर सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर. तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है.
कि देयर इज अ ट्रांसमिशन लाइन, जो हमारी मेन ट्रांसमिशन लाइन है विद कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 एंड फेज कांस्टेंट बीटा। इस ट्रांसमिशन लाइन को जब हम एक लोड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लोड इम्पीडेंस, लेट मी, लोड इम्पीडेंस को मैं ZL से डिनोट कर रहा हूँ एज बिफोर। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि ZL इज नॉट इक्वल टू Z0। जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो हमारा सिस्टम है, उसकी जो इम्पीडेंस है वो लोड के बराबर नहीं है। सो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जब सिग्नल आएगा, सो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। सो नॉट ऑल सिग्नल जो कि लोड से जो हमारे पास, सॉरी, सोर्स की तरफ से जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है, वो सारा का सारा लोड को नहीं मिल रहा, बल्कि लोड से कुछ चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं किसकी मदद से? क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की, क्योंकि दिस स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है कि इट इज अ यूजफुल सर्किट फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। तो व्हाट वी कैन डू इज, इसका सोल्यूशन अब क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम क्या करेंगे कि इस मेन ट्रांसमिशन लाइन को लेंगे। तो ये हमारी सेम ट्रांसमिशन लाइन है, और ट्रांसमिशन लाइन को लोड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने के बजाय हम इसके दरमियान में एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर लगा देंगे, जिसकी लेंथ हमने रखनी है λ/4। और इसकी इस क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन है, इफ यू गो बैक, मैंने क्या कहा हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइन के, सॉरी, क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसमिशन लाइन। सो ट्रांसमिशन लाइन और इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगी, जिसको हम Z1 कहते हैं। और ये हमारे अब लोड और मेन ट्रांसमिशन लाइन के दरमियान ये चीज हो गई Z। और ये सर्किट हमने किस मकसद के लिए किया है कि हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम था इम्पीडेंस मिसमैचिंग का प्रॉब्लम, अब क्या होगा कि हमारा सर्किट मैच हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज कि ये किस तरह मैच होगा? ठीक है, दो चीजें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। इन अदर वर्ड्स, पहली तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि जो Z1 है, एक तो हमारे पास ये अननोन है कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितनी होनी चाहिए। और दूसरा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये हमारा सर्किट मैच हो गया, इसका मतलब है कि अब यहाँ से जो सिग्नल आएगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा, उसको ऐसे फील होगा कि एज इफ सामने मैच लोड पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 होना चाहिए। सो इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 कैसे होगा और Z1 की वैल्यू क्या